ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराणम् उमा संहितायाम् अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। कश्यप वर्णनम्। सूत उवाच अदितिर्दितिश्च सुरसारिष्टेलादनुरेव च सुरभिर्विनता चेला ताम्रा क्रोधवसा तथा कद्रुर्मनिश्च विप्रेन्द्र तास्पत्यानि मे शृणु। पूर्वमन्वन्तरे श्रेष्ठे द्वादशासन् सुरोत्तमा तुषिता नाम तेऽन्योन्य मुचुर्वैवस्वतेऽन्तरे उपस्थितेषु यशसश्चाक्षुषस्यान्तरे मनो हिताय सर्वलोकानां समागम्य परस्परम् आगच्छतस्तु तानोचोरदिति च प्रविश्य वै मन्वन्तरे प्रसूयामास तां श्रेयो भविष्यति। एवमुक्तास्तु ते सर्वे चाक्षुषस्यान्तरे मनो मारीचात् कश्यपाज्जातास्ते दित्यां दक्षकन्यया तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव हि अर्यमा चैव धाता च त्वष्टा पूषा तथैव च विवस्वान् सविता चैव मित्रा वरुण एव च अंशो भगश्चाति तेजा आदित्या द्वादश स्मृता चाक्षुषस्यान्तरे पूर्वमासन्ने तुषितासुरा पुरैव तस्यान्तरे तु आदित्या द्वादश स्मृता इति प्रोक्तानि क्रमशोदित्यपत्यानि शौनक। सप्तविंशतिया प्रोक्ता सोमपत्न्योऽथ सुभृता तासामपत्यान्यभवन् दीप्तयोमिततेजसा अरिष्टनेमि पत्नीनाम् अपत्यानीह षोडश बहुपुत्रस्य विदुषश्च तस्रो या सुताः स्मृता कृशास्वस्य तु देवर्षे देवप्रहरणा स्मृता भार्यायामर्चिषि मुने धूम्रकेशस्तथैव च स्वधा सती च द्वौ पत्न्यौ स्वधा ज्येष्ठा सती परा स्वधा सूतपितॄन् वेद मथर्वाङ्गिरसं सति एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि सर्वदेवनिकायाश्च त्रयस्त्रिंशत्तु कामजा यथा सूर्यस्य नित्यं हि उदयास्तमयाविह एवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे। दित्या बभूवतो पुत्रौ कश्यपादिति न श्रुतं हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षश्च वीर्यवान् सिंहिका ह्यभवत्कन्या विप्रचित्ते परिग्रह हिरण्यकशिपो पुत्राश्चत्वारा प्रथितौजसः अनुह्रादश्च ह्रादश्च संह्रादश्चैव वीर्यवान् प्रह्लादश्चानुजस्तत्र विष्णुभक्तिविचारधि अनुह्रादस्य सूर्यायां पुलोमा महिषस्तथा ह्लादस्य धमनिर्भार्या सूतवातापि मिल्बलं संह्रादस्य कृतिर्भार्या सूतपञ्चजनं ततः विरोचनस्सु प्रह्लादिर्देव्यां तस्याभवद्बलिः बले पुत्रशतं त्वासीद् असनायां मुनीश्वर बलिरासेन्महाशैव शिवभक्तिपरायणः दानशील उदारश्च पुण्यकीर्तितपा स्मृतः तत्पुत्रो बाणनामा यः सोऽपि शैव वरासुधि या सन्तोष्य शिवं सम्यक् गाढपत्यमवापः सा कथा श्रुतपूर्वा ते बाणस्य हि महात्मनः कृष्णं यः समरे वीरा सुप्रसन्नं चकारः हिरण्याक्षसुता पञ्च पंडिता सुमहाबला कुकुरा शकुनिश्चैव भूतसन्तापनस्तथा
महानादश्च विक्रान्ता कालनाभस्तथैव च इत्युक्तादितिपुत्राश्च धनुपुत्रान् मुने शृणु अभवन्दनुपुत्राश्च शतं तीव्रपराक्रमा अयो मुखासम्बरश्च कपोलो वामनस्तथा वैश्वानरापुलो मा च विद्रावणमहाशिरौ स्वरभानुर्वृषपर्वा च विप्रचित्तिश्च वीर्यवान् एते सर्वे धनो पुत्रा कश्यपादनुजगिरे येषां पुत्रान् शृणुमुने प्रसङ्गाद्वच्मि ते नघ स्वरभानोऽस्तु प्रभाकन्या पुलो उम्भस्तु शचीसुता उपदानवी हयशिरा शरमिष्ठा वार्षपर्वणि पुलोमा पुलोमिका च वैश्वानरसुते उभे वह पत्ते महावीरे मारीचेस्तु परिग्रह तयो पुत्रसहस्राणि षष्टिर्दानवनन्दना मरीचैर्जनयामास महता तपसान्विता पौलोमा कालखञ्जाश्च दानवानां महाबला अवध्या देवतानां च हिरण्यपुरवासिनः पितामह प्रसादेन ये हता सभ्यसाचिना सिंहिकायामथोत्पन्ना विप्रचित्ते सुतास्तथा दैत्यदानवसंयोगाद्यातास्तीव्रपराक्रमा सैंगिकेया इति ख्यातास्त्रयोदश महाबला राहुशल्या सुबलिनो बलश्चैव महाबलः वातापिर्नमुचिश्चैवाथेल्बला स्वश्रीपस्तथा अजिको नरकश्चैव कालनाभस्तथैव च सरमाणा सरकल्प एते वंशविवर्धना। येषां पुत्राश्च पौत्राश्च धनुवंशविवर्धना बहवश्च समुद्भूता विस्तारत्वान्न वर्णिता संघ्रादस्य तु दैतेया निवातकवचाकुले उत्पन्ना मरुतस्तस्मिंस्तपता भावितात्मनः षण्मुखाद्या महासत्त्वास्ताम्राया परिकीर्तिता काकी सेनी च भासी च सुग्रीवी च सुकी तथा गृध्रिकाक्ष्वीहिलूकी च ताम्रकन्या प्रकीर्तिता काकी काका न जनयत् उलूकी प्रत्युलूककान् सेनी सेनास्तथा भासी भासान् गृध्री तु गृद्धकान् सुकी सुका न जनयत् सुग्रीवो सुवपक्षिणः अश्वान् उष्ट्रान् गर्दभाश्च ताम्रा च कश्यपप्रिया जनयामास चेत्त्वेवं ताम्रा वंशा प्रकीर्तितः विनीतायाश्च पुत्रौ द्वौ वरुणौ गरुणस्तथा सुपर्णापततां श्रेष्ठो दारुणा स्वेन कर्मणा सुरसाया सहस्रं तु सर्पाणाममितौजसाम् अनेकशिरसां तेषां खेचराणां महात्मनां येषां प्रधाना राजाना शेषवासुकिस्तक्षका ऐरावतो महापद्मा कम्बला स्वतरा बुभौ ऐलपुत्रस्तथा पद्मा करकोटकधनञ्जयौ महानीलमहाकर्णौ धृतराष्ट्रो बलाहकः कुहरापुष्पदन्तश्च दुर्मुखा सुमुखस्तथा बहुशाखररोमा च पाणिरित्येव मादयः गणाक्रोधवशायाश्च तस्या सर्वे च दंष्ट्रिणः अण्डजा पक्षिणोऽब्जाश्च वरायापशवो मता अनायुषाया पुत्राश्च पञ्चाशश्च महाबला अभवन् बलवृत्तौ च भिक्षरूथ बृहस्तथा शशांस्तो जनयामास सुरभिर्महिषास्तथा इलावृक्षान् लतावल्लिस्तृणजातीस्तु सर्वशः खसातो यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा अरिष्टासूतसर्पाश्च प्रभावैर्मानवोत्तमान् एते कश्यपदायादा कीर्तितास्ते मुनीश्वरा
येषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रशः। जय जय श्री शिव महापुराणे पंचम्यां उमासंहितायां कश्यपवंशवर्णनं नाम द्वात्रिंशोऽध्याय अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। सर्गवर्णनं। सूत उवाच एषमन्वन्तरे तात सर्गा स्वारोचिषे स्मृतः। वैवस्वते तु महते वारुणे वितते कृतौ। जुह्वानस्य ब्राह्मणो वै प्रजासर्ग इवोच्यते। पूर्वयानाथ ब्रह्मर्षिनुत्पन्नात् सप्तमानसान् पुत्रान् वै कल्पयामास स्वयमेव पितामहः। तेषां विरोधे देवानां दानवानां महामृषे दितिर्विनिष्टपुत्रा तु कश्यपं समुपस्थिता। तां कश्यपा प्रसन्नात्मा सम्यक् आराधितस्तथा वरेण छेदयामास सा च बभ्रे वरं तदा। पुत्रमिन्द्रवधार्थाय समर्थमितौजसं स तस्यै च परं प्रादात् प्रार्थितं सुमहातपा। ब्रह्मचर्यादिनियमं प्राह चैव शतं समा। धारयामास गर्भं तो शुचिसा वरवर्णिनी। ब्रह्मचर्यादिनियमं दितिर्दध्रे तथैव वै। ततस्त्वाधाय सोदित्यां गर्भं तं संसितभृता। जगाम कश्यपस्तप्तुं तपा संहृष्टमानसः। तपस्तस्याचैवान्तरं प्रेप्सु सोऽभवत्पाकशासनः। ऊनवर्षे सते चास्या ददर्शान्तरमेव सः। अकृत्वा पादयो शौचं दितिरर्वाक्षिरास्तदा। निद्रामाहारयामास भाविनोऽर्थस्य गौरवात्। एतस्मिन्नन्तरे शक्रस्तस्या कुक्षं प्रविश्य सः। वज्रपाणिस्तुतं गर्भं सप्तदाहि निकृन्तत। स पाट्यमानो गर्भोत वज्रेण प्ररुरोधः। रुदन्तं सप्तधैकैकं मारोदीरिति तान् पुनः। चकर्त वज्रपाणिस्तान्नैव ममृस्तथापि ते तमोचोपात्यमाना सर्वे प्राञ्जलयो मुने। नो जिघांससि किं शक्र भ्रातरो मरुतस्तव। इन्द्रेण स्वीकृतास्ते हि भ्रातृत्वे सर्व एव च। तत्यजुर्दैत्यभावं ते विप्रर्षे शङ्करेक्षया। मरुतो नाम ते देवा बभूवुः महाबला। खगा एकोनपञ्चाशत् सहाया वज्रपाणिनः। तेषामेव प्रवृद्धानां हरिप्रादात् प्रजापतिः। क्रमशस्तानि राज्यानि पृथुर्पूर्वं शृणुष्व तत्। अरिष्टापुरुषो वीरा कृष्णो जिष्णो प्रजापतिः। पर्जन्यस्तु धनाध्यक्षस्तस्य सर्वमिदं जगत्। भूतसर्गमिमं गम्यक् अभूचं ते महामुने। विभागं शृणु राज्यानां क्रमशस्तं ब्रुवेधुना। अविशिच्याधिराज्ये तो पृथुं वैन्यं पितामहः। तथा क्रमेण राज्यानि व्याप्तेष्टुमुपचक्रमे। द्विजानां विरुधां चैव नक्षत्रग्रहयोस्तथा। यज्ञानां तपसां चैव सोमं राज्येऽभ्यसेचयत्। अपां तु वरुणं राज्ये राज्ञां वैश्रवणं प्रभुम्। आदित्यानां तथा विष्णुं वसूनामथ पावकम्। प्रजापतीनां दक्षं तु मरुतामथ वासवम्। दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादममितौजसम्। वैवस्वतं पितॄणां च यमं राज्येऽभ्यसेनयत्। मातॄणां च भृतानां च मन्त्राणां च तथा गवां। यक्षाणां राक्षसानां च पार्थिवानां तथैव च। सर्वभूतपिशाचानां गिरिशं शैलानां हिमवन्तं च नदीनामथ सागरं। मृगाणामथ शार्दूलं गोवृषं तु गवामपि। वनस्पतीनां वृक्षाणां वटं राज्ये विसेचयत्। इति दत्तं प्रजेशेन राज्यं सर्वत्र वैक्रमात्। पूर्वस्यां दिशि पुत्रं तुर्वैराजस्व प्रजापते। स्थापयामास सर्वात्मा राज्ये विश्वपतिर्विभो। तथैव मुनिशार्दूलकर्दमस्य प्रजापते।
दक्षिणस्यां तथा पुत्रं सुधन्वानमचीक्लिपत् पश्चिमायां दिशि तथा रजसा पुत्रमच्युतं केतुमन्तं महात्मानं राजानव्यादिशत्प्रभो तथा हिरण्यरोमाणं पर्जन्यस्य प्रजापते उदीच्यां दिशि राजानं दुर्धर्षं सोऽभ्यसेचयत् तस्य विस्तरमाख्यातं पृथोर्वैन्यस्य शौनक महार्धैतदधिष्ठानं पुराणं परिकीर्तितम् इति श्रीशिवमहापुराणे पंचम्याम् उमासंहितां सर्गवर्णनं नाम 33तमोऽध्यायः। अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। सर्वमन्वन्तनुकीर्तनम्। शौनक उवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि विस्तरेणानुकीर्तय यावन्तो मनवश्चैव श्रोतुमिच्छामि तानहं। श्रुत उवाच स्वायंभुवो मनुश्चैव तथा स्वारोचिषस्तथा उत्तमस्तामसश्चैव रैवतश्चाक्षुषस्तथा एते च मनवः षट्ते सम्प्रोक्ता मुनिपुङ्गव वैवस्वतो मुनिश्रेष्ठ साम्प्रतं मनुरुच्यते सावर्णिश्च मनुश्चैव ततो रौच्यस्तथा परः तथैव ब्रह्मसावर्णिश्चत्वारो मनवस्तथा तथैव धर्मसावर्णे रुद्रसावर्णिरेव च देवसावर्णिराख्यात इन्द्रसावर्णिरेव च अतीता वर्तमानाश्च तथैवानागताश्च ये कीर्तिता मनवश्चापि मयैवैते तत् यथा श्रुता मुने चतुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते प्रोक्तानेभिर्मिता कल्पो युगसाहस्रपर्ययः ऋषिस्तेषां प्रवक्ष्यामि पुत्रान् देवगणास्तथा शृणु शौनकसुप्रीत्या क्रमशस्तान्यशस्विनः मरीचिरत्रिभगवानङ्गिरा पुलः क्रतो पुलस्त्यश्च वसिष्ठश्च सप्तैते ब्रह्मणा सुता उत्तरस्यां दिशि तथा मुने सप्तर्षयस्तथा यामानाम तथा देवा आसन् स्वायंभुवेन्तरे आग्निध्रश्चाग्निबाहुश्च मेधा मेधातिथिर्वसुः ज्योतिष्मान् धृतिमान् हव्या सवना शुभ्र एव च स्वायंभुवस्य पुत्रास्ते मनुर्दशमहात्मना कीर्तिता मुनिशार्दूल तत्रेन्दो यज्ञ उच्यते प्रथम कथितं तात दिव्यं मन्वन्तरं तथा द्वितीयं ते प्रवक्ष्यामि तन्निबोध यथा तथम् ऊर्जस्तंभा परस्तंभो तंभ ऋषभो वसुमास्तथा ज्योतिष्मान् द्युतिमाश्चैव रोचिष्मान् सप्तमस्तथा एते महर्षयो ज्ञेया तत्रेन्दो रोचनस्तथा देवाश्च तुषिता नाम स्मृता स्वारोचिषेन्तरे हरिघ्ना सुकृतिर्ज्योति रयो मूर्तिरयस्मयः प्रथितश्च मनस्युश्च नमा सूर्यस्तथैव च स्वारोचिषस्य पुत्रास्ते मनोर्दशमहात्मनः कीर्तिता मुनिशार्दूल महावीर्यपराक्रमा द्वितीयमेतत्कथितं मुनिमन्वन्तरं मया तृतीयं तव वक्ष्यामि तन्निबोध यथा तथम् वसिष्ठपुत्रा सप्तासन् वासिष्ठा इति विश्रुता हिरण्यगर्भस्य सुता ऊर्जा नाम महौजसा ऋषयोऽत्र समाख्याता कीर्त्यमानान्निबोध मे औत्तमीया ऋषिश्रेष्ठ दशपुत्रा मनुस्मृता इस ऊर्जित ऊर्जश्च मधुर्माधव एव च शुचि शुक्रवश्चैव नभसो नभ एव च ऋषभस्तत्र देवाश्च सत्यवेदश्रुतादयः तत्रेन्द्रा सत्यजिन्नाम त्रैलोक्याधिपतिर्मुने तृतीयमेतत्परमं मन्वन्तरमुदाहृतं मन्वन्तरं चतुर्थं ते कथयामि मुने शृणु गार्ग्या पृथुस्तथा वाग्मी जन्यो धाता कपीनकः कपीवान् सप्तऋषया सत्या देवगणास्तथा तत्रेन्द्रस्त्रिशिको ज्ञेयो मनुपुत्रान् मुने शृणु द्युतिपोता सौतपस्यस्तपाशूलश्च तापनः
तपोरतिरकल्मासो धन्वे खड्गी महाऋषिः तामसस्य स्मृता ये ते दशपुत्रा महाभृता तामसस्यान्तरं चैव मनोर्मे कथितं तव चतुर्थं पंचमं तात शृणुमन्वन्तरं परं देवबाहुर्जयश्चैव मुनिर्वेदशिरास्तथा हिरण्यरोमा पर्जन्य ऊर्ध्वबाहुश्च सोमपा सत्यनेत्ररताश्चान्ये एते सप्तर्षयोपरि देवाश्च भूतरजसस्तपा प्रकृतयस्तथा तत्रेन्दो विभुनामा च त्रैलोक्याधिपतिस्तथा रैवताख्यो मनुस्तत्र गेयस्तामससोदरः अर्जुना पंक्तिबिंधो वादयायास्तनया मुने महता तपसा युक्ता मेरुपृष्ठे वसन्तिः रुचे प्रजापतिपुत्रो रौच्यो नाम मनुस्मृता भूत्या चोत्पादितो देव्यां भौत्यो नामाभवत्सुतः अनागताश्च सप्तैते कल्पेऽस्मिन्मनवा स्मृता अनागताश्च सप्तैव स्मृता दिविमहर्षयः रामो व्यासस्तथात्रेयो दीप्तिमान् सुबहुश्रुतः भरद्वाजस्तथा द्रोणीरश्वत्थामा महाद्युतिः गौतमस्यात्मजश्चैव शरद्वान् गौतमा कृपः कौशिको गालवश्चैव रुरुकश्यप एव च एते सप्तमहात्मानो भविष्यामुनिसत्तमा देवाश्चादागतास्तत्र त्रया प्रोक्ता स्वयंभुवः मरीचस्यैव पुत्रास्ते कश्यपस्य महात्मनः तेषां विरोचनसुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति विशाङ्गश्चावनीवाश्च सुमन्तो धृतिमान् वसुः सूर्येशुराख्यो विष्णुश्च राजा सुमतिरेव च सावर्णेश्च मनोपुत्रा भविष्यादश सौनक इहाष्टमं हि कथितं नवमं चान्तरं शृणु प्रथमं दक्षसावर्णे प्रवक्ष्यामि मनुं शृणु मेधातिथिश्च पौलस्त्यो वसुकश्यप एव च ज्योतिष्मान् भार्गवश्चैव धृतिमानङ्गिरास्तथा सवनश्चैव वासिष्ठ आत्रेयो हव्य एव च पुलः सप्त इत्येते ऋषयोरौहितेन्तरे देवतानां गणास्तत्र त्रय एव महामुने दीक्षापुत्रस्य पुत्रास्ते रोहितस्य प्रजापते धृष्टकेतुर्दीप्तकेतु पंचहस्तो निराकृतिः पृथुस्रवा भूरिदुम्नो ऋचिको बृहतो गयः प्रथमस्य तु सावर्णिर्नवपुत्रा महौजसः दशमे त्वत्पर्याये द्वितीयस्यान्तरे मनो हविष्मान् पुलहश्चैव प्रकृतिश्चैव भार्गवः आयो मुक्तिस्तथा त्रेयो वसिष्ठश्चाव्यया स्मृतः पौलस्त्या प्रेतिश्चैव भामारश्चैव कश्यपः अंगिरानेन सा सत्या सप्तैते परमर्षयः देवतानां गणाश्चापि द्विषीमन्तश्च ये स्मृता तेषामिन्द्रा स्मृता शम्भुस्त्वमेव महेश्वरः अक्षत्वानुत्तमौजाश्च भूरिसेनश्च वीर्यवान् शतानीको निरामित्रो भृस्सेनो जयद्रथा भूरिदुम्ना सुवर्चार्चिर्दश एत्वेते मनोसुता एकादशे तु पर्याये तृतीयस्यान्तरे मनु तस्यापि सप्त ऋषया कीर्त्यमानान्निबोध मे हविष्मान् कश्यपश्चापि वपुष्माश्चैव वारुणः आत्रेयोत वसिष्ठश्च ह्यनयस्त्वं गिरास्तथा चारुदृश्यश्च पौलस्तो नीश्वरोऽग्निस्तु तैजसः सप्तैते ऋषया प्रोक्ता त्रयो देवगणा स्मृता ब्रह्मणस्तो सुतास्तेहित इमे वैधृता स्मृता सर्वगश्च सुशर्मा च देवानीकस्तु क्षेमकः दृढेषु खण्डको दर्शा कुर्बाहो मनुस्मृता सावर्णस्य तु पौत्रा वै तृतीयस्य नवस्मृता चतुर्थस्य तु सावर्णं ऋषीन् सप्त निबोध मे द्वितीर्वसिष्ठपुत्रश्च आत्रेया सुतपास्तथा अंगिरास्तपसो मूर्तिस्तपस्वी कश्यपस्तथा तपोधनश्च पौलस्त्या पुलहश्च तपोरतिः भार्गवा सप्तमस्तेषां विज्ञेयस्तपसो निधि पंचदेवगणा प्रोक्ता मानसा ब्रह्मणा सुता
ऋतधामा तदिन्द्रो हि त्रिलोकी राज्यकृत्सुखी द्वादशे चैव पर्याये भाव्ये रौच्यान्तरे मुने अंगिराश्चैव धृतिमान् पौलस्त्यो हव्यवास्तु यः पौलहस्तत्त्वदर्शी च भार्गवश्च निरुत्सवः निष्प्रपञ्चास्तथा त्रेयो निर्देहः कश्यपस्तथा सुतपाश्चैव वासिष्ठा सप्तैवैते महर्षयः त्रय एव गणा प्रोक्ता देवतानां स्वयंभुवा दिवस्पतिस्तदिन्द्रो वै विचित्रश्चित्र एव च नयो धर्मधृतोऽध्रश्च सुनेत्रा छत्रवृद्धकः निर्भया सुतपा द्रोणो मनोरौच्यस्य ते सुता चतुर्दशे तु पर्याये सत्यस्यैवान्तरे मनो आग्नेद्राकाश्यपश्चैव पौलस्त्यो मागधश्च यः भार्गवोऽप्यतिबाह्यश्च शुचिरङ्गिरसस्तथा युक्तश्चैव तथा त्रेया पौत्रो वासिष्ठ एव च अजितापुलहश्चैव हिन्त्याः सप्तर्षयश्च ते पवित्राश्चाक्षुषा देवा शुचिरिन्द्रो भविष्यति एतेषां कल्य उत्थाय कीर्तिनामुखमेधते अतीतानागतानां वै महर्षीणां नरैः सदा देवतानां गणा प्रोक्ता शृणु पञ्च महामुने तरङ्गभीरुर्बुध्नश्च तनुग्रो एव च अभिमानी प्रवीणश्च विष्णुसङ्क्रन्दनस्तथा तेजस्वी सबलश्चैव सत्यस्त्विते मनोसुता भौमस्यैवाधिकारी वै पूर्वकल्पस्तु पूयते इत्येतेनागतातीता मनवा कीर्तियता मया उक्ता सनत्कुमारेण व्यासायामित तेजसा पूर्णे युगसहस्रान्ते परिपाल्य स्वधर्मतः प्रजासु तपसा युक्ता ब्रह्मलोकं व्रजन्ति ते युगानि सप्ततिस्त्वेकं साग्राण्यं तरमुच्यते चतुर्दशैते मनवा कीर्तिता कीर्तिवर्धना मन्वन्तरेषु सर्वेषु संहारान्ते पुनर्भवः न शक्यमन्तरं तेषां वक्तुं वर्षशतैरपि पूर्णे शतसहस्रे तु कल्पो निशेष उच्यते तत्र सावर्णीभूतानि दग्धान्यादित्यरश्मिभिः ब्रह्माण्डमग्रता कृत्वा सदादित्यगणैर्मुने प्रविशन्ति सुरश्रेष्ठ हरिं नारायणं परं सृष्टारं सर्वभूतानां कल्पान्तेषु पुनः पुनः भूयोऽपि भगवान् रुद्रा संहार्ता काल एव हि कल्पान्ते तत्प्रवक्ष्यामि मनुर्वैवस्वतस्य वै इति ते कथितं सर्वं मन्वन्तरसमुद्भवं विसर्गपुण्यमाख्यानं धन्यं कुलविवर्धनम् इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां उमासंहितायां सर्वमन्वन्तरानुकीर्तनं नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। अथ पंचत्रिंशोऽध्यायः। वैवस्वतवर्णनं सूत उवाच विवस्वान् कश्यपाञ्जज्ञे दाक्षायण्यां महाऋषे तस्य भार्या भवत्संज्ञा त्वाष्ट्रीदेवी सुरेणुका मुने सहिष्णुना तेन तेजसा दुसहेन च भर्तृरूपेण नातुष्यद्रूपयौवनशालिनी आदित्यस्य तद्रूपमसहिष्णुषु तेजसः दह्यमाना तदोद्वेगमकरुद्वरवर्णिनी ऋषेश्यां त्रीण्यपत्यानि जनयामास भास्करः संज्ञायां तु मनो पूर्वं श्राद्धदेवा प्रजापतिः यमश्च यमुना चैव यमलौ सम्बभूवतु एवं हि त्रीण्यपत्यानि तस्यां जातानि सूर्यतः संवर्तुलं तु तद्रूपं दृष्ट्वा संज्ञा विवस्वतः असहन्ति ततश्छायामात्मना सासृजच्छुभां मायामयी तु सा संज्ञामवोचद् भक्तिता शुभे किं करोमि कार्यं ते कथयस्व शुचिस्मिते संज्ञोवाच अहं यास्यामि भद्रं ते ममैव भवनं पितुः त्वैतद्भवने सत्यं वस्तव्यं निर्विकारतः इमौ मे बालकौ साधु कन्या चेयं सुमध्यमा पालनीया सुखेनैव मम चेदिच्छसि प्रियं छायोवाच आकेशग्रहणाद्देवी सहिष्येयं सुदुष्कृतं
ख्यास्यामि मतं तुभ्यं गच्छ देवी यथा सुखं। सूत उवाच इत्युक्ता सा गमद्देवी व्रीडिता सन्निधौ पितुः। पित्रा निर्वर्षिता तत्र नियुक्ता सा पुनः पुनः। आगच्छद्वड्वा भूत्वा क्षाद्यरूपं तथा सुखं। कुरुंस्तदुत्तरान् प्राप्य नृणां मध्ये चचारः। संज्ञां तां तु रविर्मत्वा छायायां सुसुतं तदा। जनयामास सा वर्णिं मनुं वै सविता किल। संज्ञानुप्रार्थिता छाया सा स्वपुत्रेऽपि नित्यशः। चकाराभ्यधिकं स्नेहं न तथा पूर्वजे श्रुते। अनुजश्चाक्षमत्तं तु यमस्तं नैव चक्षमे। स सरोषस्तु बाल्यश्च भाविनोऽर्थस्य गौरवात्। छायां सन्तर्जयामास यदा वैवस्वतो यमः। तं सचाप तथा क्रोधात् छाया तो कलुषीकृता। चरणात् पतता मे स तवेति भृशरूपितः। यमस्तथा पितुः सर्वं प्राञ्जलि प्रत्यवेदयत्। भृशं शापभयोद्विग्ना संज्ञा वाक्यैर्विचेष्टितः। मात्रा स्नेहेन सर्वेषु वर्तितव्यं सुतेषु वै। स्नेहमस्मासुपाकृत्य कनीयांसं बिभर्ति सा। तस्मान्मयोद्यतं पादस्तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। सप्तोऽहमस्मि देवेश जनन्यात्तपताम्बर। तव प्रसादात् चरणो न पतेन्मम गोपते। सवितोवाच असंशयं पुत्रमहत् भविष्यत्यत्र कारणं। येन त्वामाविशत् क्रोधो धर्मज्ञं सत्यवादिनम्। न शक्यते तन्मिथ्या वै कर्तुं मातृवचस्तव। क्रमयो मांसमादाय गमिष्यन्ति महीतले। तद्वाक्यं भविता सत्यं त्वं च त्रातो भविष्यसि। कुरुतात न सन्देहं मनश्चाश्वास्य स्वं प्रभो। सूत उवाच इत्युक्त्वा तनयं सूर्ये यमसंज्ञं मुनीश्वर। आदित्यश्चाब्रवीत्तां तु छायां क्रोधसमन्वितः। सूर्य उवाच हे प्रिये कुमते चण्डी किं त्वया चरितं किल। किन्तु मेऽप्यधिकं स्नेह एतदाख्यातुमर्हसि। सूत उवाच सा रवेर्वचनं श्रुत्वा यथा तथ्यं न्यवेदयत्। निर्दग्धा कामरविणा सान्त्वयामास वै तदा। छायोवाच तवातितेजसा दग्धा इदं रूपं न शोभते। असहन्ती च तत्संज्ञा वने वसति साध्वले। श्लाघ्या योगबलोपेता योगमासाद्य गोपते। अनुकूलस्तु देवेश सन्दिश्यात्ममयं मतं। रूपं निवर्तयाम्यद्य तव कतिं करोम्यहम्। सूत उवाच तच्छ्रुत्वापगता क्रोधो मार्तण्डस्य विभस्वतः। भ्रमिमारोप्य तत्तेजा सातयामास वै मुनिः। ततो विभ्राजितं रूपं तेजसा संवृतेन च। कृतं कान्ततरं रूपं तुष्टा तच्छुशुभे तदा। ततो धियोगमास्थाय स्वां भार्या हि ददर्शः। अदृश्यां सर्वभूतानां तेजसा नियमेन च। स्वस्वरूपं समास्थाय गत्वा तां मैथुनेक्षया। मैथुनाय विचेष्टन्तीं पुरपुंसोऽभिशङ्कया। मुखतो नासिकायां तो शुक्रं तद्व्यदधान्मुने। देवौ तथा प्रजायेतामश्विनौ मिषजाम्बरौ। नासत्यौ तौ च दस्रौ च स्मृतौ द्वौ अश्विनावपि। तौ तु कान्तेन रूपेण दर्शयामास भास्करः। आत्मानं सातु तं दृष्ट्वा प्रहृष्टा पतिमादरात्। पत्या तेन गृहं प्रागात् स्वं सती मुदितानना। मुमुदातेथ तौ प्रीत्या दम्पती पूर्वतोऽधिकम्। यमस्तु कर्मणा तेन भृशं पीडितमानसः। धर्मेण रञ्जयामास धर्मराज इमा प्रजा। लेभेश कर्मणा तेन धर्मराजो महाद्युतिः। पितॄणामाधिपत्यं च लोकपालत्वमेव च। मनो प्रजापति स्वासे सावर्णे स तपोधनः। भाव्यासकर्मणा तेन मनोसा वर्णिकेन्तरे। मेरुपृष्ठे तपोघोरमद्यापि चरते प्रभो। यवीयसी तयोर्यातु यमी कन्या यशस्विनी।
अभवत् सा सरिश्रेष्ठा यमुना लोकपावनी। मनुरित्युच्यते लोके सा वर्णिरिति चोच्यते। या इदं जन्म देवानां शृणु याद्धारयेत्तु वा। आपदं प्राप्य मुच्येत प्राप्नुयात् सुमहद्यशः। इति श्रीशिवमहापुराणे पंचम्यां उमासंहितां मन्वन्तरकीर्तने वैवस्वतवर्णनं नाम 35 ॐ नमः शिवाय।